तो हमारी आपने अगर एक वीडियो देखी हुई कुछ दिन पहले आई थी, हम आए थे फॉन्डार्ट में, राइट? एंड राग वर्मा वाज नॉट हियर, ये ओनर हैं। एंड मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वी आर गोना कम बैक एंड टॉक टू द ओनर, एंड हियर वी आर। ठीक है। अच्छा राग, ऑफ द कैमरा भी हम यही बात कर रहे थे, तो एवरी टाइम हम जब लखनऊ आते हैं तो दिस इज लाइक मक्का फॉर मी। आई मैं यहाँ आता जरूर हूँ, राइट? And it is like the food that brings me back over and over again. The croissants, the pastries, the burger, and the pizzas, right? So tell me, in Lucknow, right? And मैं बहुत सालों से लखनऊ आ रहा हूँ, right? Of course ये अपने अवध कुजीन के लिए जाना जाता है, वो तहजीब के लिए जाना जाता है। हम नवाब से भी मिले, हम तमाम जैसे डॉक्टर शोभित चावला हैं, उनको भी मतलब ही इज वेरी नॉलेजेबल अबाउट फूड एज वेल, राइट? तो आप मुझे एक बात बताइए राग, आई वांट टू नो हाउ डिड यू एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन अ प्लेस जो अवधी कुजीन के लिए जाना जाता है, बताइए। So, first of all, thank you so much for allowing me this opportunity, and I really appreciate and humbled by your feedback about the place. ये जो जगह है या ये जो ब्रांड है, ये बेसिकली मेरा और मेरी वाइफ का एक इन्वेंशन था। राइट। हम लोग दोनों ही हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से आते हैं। We both were at very senior corporate positions in 5-star hotels, primarily Leela and Kempinski. Right. So she was in Leela, I was in Kempinski. मैंने बहुत एक काफी बड़ी कंपनी है टैमरिन ग्लोबल, उसके एज अ जनरल मैनेजर आउटबाउंड सेल्स काम किया है। सो मेरा बाहर का एक्सपोजर बहुत रहा है। आई हैव ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली टू यूरोप, टू यूएई, आई हैव लिव्ड इन लंदन। सो कोविड वाज वन सच अपॉर्चुनिटी, जिसको कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी एंड एडवर्सिटी वाला जो सिनेरियो होता है, कोविड वाज वन सच थिंग। We were in fancy corporate jobs in Delhi, but when COVID struck, we came back to our hometown. My father is a retired director from UP Power Corporation. He was in Purvanchal Vidyut Vikas Nigam as a director. So जब हम लोग लखनऊ में थे, so it was my father's idea कि यहाँ पर अभी खाली टाइम है, कुछ कर नहीं रहे, so let's do something. At that time, there is I'll give the credit to a gentleman called Mr. Rajneesh Chopra. He's my uncle, my godfather, as I call him. Second is Dr. Shobhit Chawla, my mentor and the second godfather. Right. So both of these gentlemen, Rajneesh uncle, to start with, he basically expressed his interest of doing some nice Belgian or French patisserie in Lucknow because he felt it missing. He's been used to going to Leela, staying in Leela Chanakyapuri. He likes the kind of pastries and chocolates to do there. So that was all missing in Lucknow. So he basically asked me to do something similar. Nidhi was the marketing brain behind it. She got Chef Abhijit Ghosh on board, and Chef Abhijit was, the nicest of gentlemen in the world to help us out with this brand, to set up this brand. We wanted to start small because it was untested waters. We did not know how the market pulse is. यहाँ पर लखनऊ में एक हर टाउन में एक नीश सेगमेंट होता है, सो वो लखनऊ में भी है। उन लोगों को हमारे जब हम लोगों ने प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, जब हमने लॉन्च किया, सो ऐसे लोगों को बहुत पसंद आए। अगर हम कुछ क्वालिटी की बात करें तो वी वर द फर्स्ट बेकरी इन टाउन जो कि सिर्फ प्योर चॉकलेट यूज कर रही थी अपनी पेस्ट्रीज में। हमारी इंडस्ट्री में होता है एक प्योर चॉकलेट होता है, एक कंपाउंड होता है। हम लोग ने कंपाउंड का यूज ही नहीं किया, मतलब नेवर एवर ड्यूरिंग आवर स्टार्ट वी एवर यूज्ड कंपाउंड चॉकलेट्स, whereas all the other bakeries were based on compound chocolates. So for the first time covaches were introduced in Lucknow. कुकीज को लेकर प्योर बटर कुकीज बोलते सब लोग हैं, लेकिन हर किसी को पता होता है कि बटर के साथ मिक्स किया जाता है मार्जरीन को। बट हम लोगों ने एब्सोल्यूट प्योर बटर कुकीज बनाई, एब्सोल्यूट प्योर बटर पैटीज बनाई, ऐसी चीजें बनाई जो कि लखनऊ में पहले थी नहीं। टाइम लगा लोगों को ये अडैप्ट करने में। जो नी सेगमेंट है उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी बिकॉज दे लव्ड इट, द टेस्ट विल बी एनहांस्ड। जब क्रॉसर्स हम लोग ने बनाए, वी स्टार्टेड विद the first time started importing butter from France to make croissants, and it's a French butter which we are using, and that's where the croissants were very different. So ये सब चीजें आने में टाइम लगा, लेकिन जैसे जैसे आती गई, जैसे जैसे लोग इसके बारे में जानने लगे, it just helped our cause. That's where FondArt was made. Yeah, so FondArt technically means
art of doing fondants. Right. So we wanted to introduce ourselves as fondant makers. However, जो ये croissants है या ये जो Danish pastries है, for example, I mean, Danish pastries in Lucknow will only be seen in a Renaissance or Fairfield या ताज में आपको वही मिलेगा, किसी standalone में नहीं मिलेगा. We were the first to do Danish pastries in a bakery environment. Right. So ये लोगों को पसंद आया. अभी भी we still are holding on our guns in terms of using couvertures and using butter in our menu. Slowly and steadily, of course, now we have introduced some mass range products. Earlier, it was primarily only catering Cakes and pastry. Yes. stuff. Now we have started introducing some mass catering products. So, चाहे वो rusks हो, चाहे puffs हो, चाहे कई ऐसी चीजें हैं. कैफे मेन्यू का जो इंट्रोडक्शन है वो अभी रिसेंट है. सो ये जो पिज्जाज हैं, ये जो बर्गर्स हैं, ये एक रिसेंट इंट्रोडक्शन है. हाँ, so it's a, you know, our core remains bakery. We are bakers. We were proud to call ourselves bakers. We are not restaurateurs or cafe owners. So it's ये एक नया ट्रायल है देखने के लिए कि how we perform in the cafe segment, because there are umpteen number of cafes in town. So you know, we can't say yeah, we stand out and we are the best. No, nothing like that. It's just an opportunity we are trying to explore कि कैसी है ये जगह, how well we do, and then we have plans of expanding this future on. But bakery and such cakes and such pastry that we are doing will remain our core. So Okay, so interesting enough, एक point मैं भी बताना चाहूँगा यहाँ पे कि like rightfully you said, yes, इनके जो pizzas और burgers है वो सिर्फ आपको गोमती नगर वाले branch में मिलेगा. Because I think 2 दिन पहले आपने देखा भी होगा, हम लोग गए थे जॉपलिन रोड वाले पे, and वहाँ पे burgers and pizzas आप नहीं करते हैं, which is interesting because I think वो आपका flagship भी है, right? Yes. Right. And so this one is like your second crown kind of thing, right? Interesting और भी है कि yes, Lucknow is a very crowded place when it comes to food, because it's of course Awadhi cuisine. Then on top of that, multiple other cuisines have actually moved in here, right? And with that, you know, pizzas and pastas, and this is like पिछली बार हम videos में भी discuss कर रहे थे कि you know the pizzas are not what Domino's and Pizza Hut are selling, Sure. right? And there's no pun intended towards what they are selling. yes, It's good what they are selling because it's selling world over, Yeah. right? I know हम भी Australia में, you know, we've I've stayed there, and even in the UK, yeah, Domino's and but there is जो actual pizza होता है, and believe me, after a long time I had the pizza here. It is the authentic Italian pizza. How are you achieving? मतलब it's a challenge to start off with, to get something authentic, right? Because बहुत सारे लोग ये समझते और जानते भी हैं कि continental food या Italian cuisine हो गई या आपका British cuisine हो गई, French cuisine हो गई, they are very bland because as per जो Indian taste होता है, right? Of course, growing up in a foreign country, बहुत rarely हमारे घर में राजमा चावल बनते थे, राइट? तो राजमा चावल का जो कॉन्सेप्ट होता था वो शायद होता था मेरी 15 डेज में एक बार, क्योंकि हम बच्चे जो वहाँ पे पले बड़े हैं, हमारे लिए तो एक थोड़ा वो हो जाता था ना कि जो लोकल कुजीन है, द डिफरेंट कुजीन्स लाइक इटालियन हो गए, आपका जो ऑस्ट्रेलियन का फिश एंड चिप्स वगैरह जो भी है, ब्रिटिश fish and chips. So the concept is quite different to what we get here, right? So was it a challenge, especially to give it that were you forced? I know that off the camera you said that you were very adamant on sticking to your guns to keep it as authentic as possible. Yes. Right? But have you ever at any stage, now I wanted to say this on camera also, are you feeling pressured or forced into giving that Indian twist? Because one thing I did not find in your pizza was Indian twist. No. Right? And the other thing is, I did say, Gordon Ramsay, take note, that burger. That burger. You're being tagged in this video again, Ramsay. But it's the authenticity, right? To no means, जो मैंने उस दिन experience किया with the pizza, right? I haven't had the chance for the pasta yet because we were short on time. But of course the pizza and the burger, right? By no means was it. Look, I'm not a critique. I'm not a food critic. I'm a car reviewer, so I'm not a food critic. But how much I've had pizzas, growing up on pizzas and proper pizzas, not the Domino's and Pizza Hut ones, you are spot on. So
does it become an inherent struggle अंदर ही से कि because I know of course यार यहाँ पे बहुत सारे ऐसे joints है और competition बढ़ता है, तो कभी urge feel होती है कि to you know Indianize the Italian cuisine, which shouldn't happen, but requirement हो जाती है. See, you know, लोगों के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं. You know, बहुत लोगों को कुछ कोई स्पेसिफिक चीज पसंद होती है और लोगों को अलग टाइप की चीजें पसंद होती है. मेरा हमेशा से यही एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है. राधा ये चीज शायद मुझे अपने फादर से मिली है कि व्हाटएवर यू डू जस्ट डू द राइट थिंग. डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, डोंट गेट ड्रिवन बाय कंपटीशन. जब हमने बेकरी शुरू करी थी, एज आई सेड, हमारे आमने सामने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स थे. ऐसे लोग थे जो 20-20 साल से इस टाउन में थे और वो लोग सक्सेसफुली वेंचर्स को रन कर रहे थे. हम चाहते तो वैसा ही कुछ करके एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को टारगेट कर सकते थे, बट दैट वाज नॉट द प्लान. आवर आइडिया वाज टू क्रिएट अ ब्रांड व्हिच पीपल परसीव्स इन टर्म्स ऑफ हाई क्वालिटी. सो नॉर्मली आपने देखा होगा जो होम बेकर्स होते हैं, कई ऐसे होम बेकर्स है. यू वुड हैव हैड फ्रेंड्स इन लखनऊ, सम ऑफ देम वी कॉमनली नो हु आर वेरी गुड होम बेकर्स and they're doing fantastically well. So I wanted to be in that commercial space wherein I get compared to those home bakers as well as other bakeries also. So the idea was very clear, maintain the quality. Similarly, ये जो cafe menu है, ये भी एक trial है, एक hidden trial method जिसे कहते हैं. ये एक trial है authenticity को पे stick करने का. पिज्जा जो होते हैं, अगर आप इटली में या जहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ है वहां पर आप जाके खाएंगे, दे आर ऑलवेज हैंड टॉस पिज्जा. ये पैन पिज्जा का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने इंडिया नहीं बनाया है. वरना हमेशा से हैंड टॉस पिज्जा होते हैं. डो बनता है जो त्रातोरियन स्टाइल ऑफ इटली, जिसको हम लोग डाइनिंग बोलते हैं, उसमें एवरीथिंग इज कुक्ड राइट इन फ्रंट ऑफ यू. वो लाइव होता है आपके सामने, डो भी आपके सामने बनता है, उसकी टॉसिंग होती है, उसकी टॉपिंग होती है. सो हमने भी वही चीज करनी चाहिए. Crust is very very thin. Yes, absolutely. So हम लोगों ने साडो पिज्जा थे. अब हम लोग we are the only bakers in town making साडो bread to the best of our ability. I mean, we are not the best in the country, but yes, in Lucknow we are the only ones making साडो. So हम लोग ने उसी फ्लावर को यूज करके हम लोग ने साडो पिज्जा बेसेस बनाए. उसका एक अच्छा फायदा क्या था कि एक तो पहली बात तो दे आर लाइटर ऑन स्टमक बिकॉज ऑफ मेजर फर्मेंटेड फ्लावर, एंड इट टेस्ट्स नाइस आल्सो. वो थोड़ा सा सार टेक्सचर देता है टेस्ट में, जो कि अच्छा लगता है. So अब इसको इंडियनाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, this could be a question. I would not do it personally. I don't like it. Neither the client base that I have would like it. And then there are other good brands which are doing it. I mean, if I want to eat a chicken tikka pizza, मैं खुद भी Domino's से order करके खा लूंगा. मतलब what's the big deal? I've been doing this all my life, so I can still do it. It's still a very weird concept to have chicken tikka or a pizza. Yeah, exactly. So, but ठीक है, people like it and we appreciate. And so अगर किसी को इंडियन खाना है, हमने सैंडविचेस में इनोवेशन किया है. वी हैव पनीर टिक्का सैंडविच, वी हैव मुंबई क्लब सैंडविच. तो ये सब इनोवेशंस इस जगह पे हैं. हाँ, बट बर्गर है, अब लैम बर्गर है, तो इट हैज टू बी लैम बर्गर. लैम बर्गर it has to be dirty, yes, it has to be messy, and it has you can't and the patty needs to be half. Yes, वो टेक्सचर आना चाहिए. अब लोग उसको अंडर कुक बोलेंगे तो ठीक है, वैसे लोगों के लिए भी रिप्लेस देम, उनको ज्यादा कोई पैटी दे सकते हैं. ऐसा हमने कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं बनाया किसी को अपसेट करना है. बट द ऑथेंटिसिटी ऑफ बर्गर लाइज इन इट्स पैटी. इट हैज टू बी जूसी. आपने उसको ओवर कुक कर दोगे सो एक क्रिस्पी पैटीज बन जाएगी, फिर वो एक मैकडॉनल्ड्स का क्रिस्पी चिकन बन जाएगा. Correct. तो वो अच्छा, interesting point. Why I say Gordon, and I'm going to switch to English here. Why I need to tag you in this is because your concept of burgers are wonderful, man, and we should catch up soon. But in the end of the day, your burgers have you've always pushed and driven, and he has. Okay, the patty has to be made fresh every day. Yes. It has to be made fresh every day. None of that, in his own words, none of that frozen shit. Yes. Right? And he gets aggressive when restaurants and hotels store them just to save costs. Yes. Or just to save time. Yes. And that takes away the flavor of the meat, right? अगर आप लोग, अब मैं हिंदी में इसको स्विच करके बता दूंगा, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मीट होता है या मटन होता है या चिकन भी अगर हम कह लें, अगर वो सेम डे पे कंज्यूम नहीं होता है और वो फ्रेश कट है सेम डे, देन उसके बाद आप चिकन नहीं खा रहे हैं, आप फ्रोजन चमड़ी खा रहे हैं.
right? If that's what I can say. Like even the Nawab had said Yes. in a previous video of ours कि जो खाना बनता है वो has to be fresh. वो एक दिन के बाद फिर वो खाना नहीं है, वो सिर्फ एक चमड़ा है, आप उसी को खा रहे हैं, right? So I get because competition है, and kudos to you, यार Raag. I see how I stumbled upon FondArt was very very interesting. तो हम लोग लखनऊ आते जाते हैं, and my niece works with Dr. Shobhit Chawla, and Dr. Shobhit Chawla is quite an avid foodie, right? So of course, so he introduced Smriti to multiple cuisines and the best places to eat in Lucknow, right? And मेरे concept में और मेरे mind में ये था, क्योंकि बहुत पहले एक series की थी, तो मेरे concept में था I know everything about Lucknow, right? But then ये यहाँ हम गलत हो जाते हैं. हमें हमेशा नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए एंड उसको डिस्कवर करना चाहिए, राइट? तो स्मृति टुक अस टू योर जॉपलिन रोड वाला जो अपना FondArt है, एंड फर्स्ट टाइम जब मैं वॉक इन किया, एंड बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप अब्रॉड, इट वाज लाइक, am I in India or have I just walked into an official, because it replicates the French patisserie, Yes. the colorfulness. Yes. मतलब अगर आपने जॉपलिन रोड का आपने देखा होगा, मैं कोशिश करके एडिटर्स को बोल रहा हूँ कि इसमें वो थोड़ा वो उसका हम लोगों ने लिया है, तो इसमें डाल दे इस वीडियो में, ताकि आपको आइडिया दे. एक्चुअली फ्रेंच, सी जो फ्रेंच कुजीन होती है ना, इट इज मेंट टू बी, दे लव द फ्रेशनेस, right? As simple as एक ratatouille, even that dish simplifies, even though it's a peasant dish, it signifies a lot more than it is. Any food has to be presented and be tasteful with presentation, right? And जब मैंने उस दिन एक पेस्ट्री है जो आप लोगों ने रोक दी है बनाना, ओपियम वाली, opera, sorry, not opium, I am getting confused here. Opera pastry, I think you've stopped making it. Discontinued for some time. We'll reintroduce it later. There was उसमें almond flour का usage होता है, जो कि I don't know, I think सभी लोग करते हैं, और उसकी थोड़ी सी shortage है. तो and when I had my first bite, I was like, wow, because like even off camera मैं राग को बता रहा था, जब हमें cravings होती है, me and my wife especially, हम लोग we tend to run to other states and other countries even to have that cuisine, right? So I couldn't believe that this was in Lucknow, right? And then I had your chocolate croissant, and then the croissant, and I ever since I've fallen in love, and I might dare to say in this video, I'm going to be working very closely with Raag to bring it very close to my home, because I really honestly love my food, and I always adore and appreciate the originality of what an authentic, food is meant to be, the way it is meant to be presented, right? I've had croissants here, and those croissants have an Indian taste, or I don't know, they don't seem fresh, And the other thing is that with pizzas and pastas, I consistently say this to whoever I meet, जितने भी लोगों से मैं मिलता भी हूँ, कि you're not, आप धोखा खा रहे हो. Because Italians, I cook at home. I love cooking Italian. I make very good spaghetti bolognese, or at least that's what Chef Ramsay told me. So, he trained me. I learned from him, and I actually learned everything from that. And it's the way you cook it as well. It's love you have to give to anything that you're doing, right? But yeah, kudos to you, really. Raag, and if अगर आप लोग लखनऊ आते हैं, एक जॉपलिन रोड पे है FondArt, और एक है अपना गोमती नगर में. अगर आपको पिज्जा, ऑथेंटिक पिज्जा, पास्ता, बर्गर, उसकी क्रेविंग्स होती है, तो प्लीज कम टू द गोमती नगर वाला FondArt, राइट? और अगर आप प्योर फ्रेंच एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, what benchmark of a French patisserie is meant to be, then go to the Joplin Road wala, right? And with that, I will. We've had I think a good session with you today, right? And I thank you for making time for us. And इनका बेटा भी अभी आया था स्कूल से आके, अभी दौड़ के इधर उधर गया था. But it was glad meeting you, and you will see more of Raag very soon. As well in and around these videos. So thank you very much, Raag, for entertaining us and being so nice and sweet and being patient with us for this video, right?
and we will definitely be seeing more of each other very soon, right? Thank you. In having said that, you guys please आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और वो घंटा भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।